अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके पास एक रिव्यू लेके आए हैं वो कि इस मिनी कीबोर्ड का है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जी ये मैंने एक मिनी कीबोर्ड परचेज़ किया था। मुझे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ ही अवेलेबल हुआ था। तो आप लोग भी इसका देख सकते हैं कि इसका कैसा रिव्यू है। इसको अनबॉक्स करेंगे और साथ देखेंगे कि जी इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है और हम इसको किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हैं, किधर लगा सकते हैं, वे वी कैन यूज़ दैट एंड what are the things which we are going to get when we are going to unbox that, what are the cables and all the accessories. So let's first see from all sides that what are the things, क्या क्या इसके साथ है, क्या क्या इसके साथ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जी आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाईफाई है, बिल्कुल चार्जेबल है, इसके अंदर कोई सेल नहीं डलता, इसके अंदर बैटरी डलती है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स दिखाऊं, these are all the details. You can attach that to notebooks, you can attach that to Xbox, you can attach that to smartphones with the help of an OTG device, smart TVs as well. Yes, I have used that. Android TV boxes, of course I'm using that, वो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ Android TV box के साथ लगा के। और इसके साथ बाकी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है पोर्टेबल, एलिगेंट एंड लाइफस्टाइल चॉइस। ओके, यू कैन गो थ्रू दैट, रीड कर सकते हैं आप इसको। और बैक साइड पे भी यही है। तो हाउ टू ओपन दैट, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे and let's see what we get. Okay, we have a charging cable, small charging cable, and it is packed in like this. This is its first look, very smooth, and this is the mouse pad on that keypad. This is the keys, this is the left right arrows, and center is the enter key. This is the left key, this is the right key. This is Internet Explorer, search, home page. These are the volume up and down. This is next and left. Rest this is also left and right clicks. They have also given here, यहाँ पे भी left right clicks हैं जी, यहाँ पे भी left right clicks हैं. You can use that like this or you can use that like this, and you with the help of, you can say you are using mouse. आप mouse use कर रहे हैं तो अंगूठे के साथ with the thumb and one thumb here with the clicking you can use that. This is the on and off button here. You can see you click right and left. When you go click on the left side, you can see this light appears and it turns on. ये on हो चुका है जिसकी इंडिकेशन दी। अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। If you press the function key and this light key which is on F2, you can enable the light as well. आप इसकी लाइट्स भी इनेबल कर सकते हैं। रात के टाइम में लाइट का कलर चेंज करना है तो आप इसी बटन से दोबारा कर सकते हैं। फंक्शन प्रेस करके रखें और आपने F2 दबाना है। ये F2 से आप ब्लू कलर के अंदर आ जाते हैं। फिर F2 दबाते हैं तो आपके पास रेड कलर आ जाता है। दोबारा दबाते हैं तो बंद हो जाती है। फिर दबाते हैं तो ग्रीन कलर आ जाता है। तो यू कैन यूज़ दैट इन केस ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग दैट एट नाइट एंड द लाइट्स आर ऑफ, इट कैन बी handy in that case. So let me show you first the battery. This is the back side of it, and when you slide that you can see that this is a battery and its USB device which you have to attach to your TV and Android device or any other device which you want to use. This is a chargeable battery, typical battery which you can charge that, and this is the USB device. I'm going to take that out. इसको मैं लगाऊंगा अब किसी टीवी के साथ, going to plug that in some Android TV box. So this is the view. It is pretty much handy. ये काफ़ी छोटा है हाथ के अंदर। अगर आप देखें तो this is my hand. You can hold that as well. ये एक काफ़ी छोटा सा एक टिपिकल बड़ा मदरबोर्ड कीबोर्ड और माउस के साथ अगर आप इसको कंपैरिजन करें, if I show you the size with the help of a mouse, you can see the comparison. This is a mouse and this is, you can say, the size of one ordinary mini keyboard, Wi-Fi mini keyboard. So yes, it is very small. This is my hand. You can see this size here as well. It comes in my hand like a sandwich, very small and very handy. It does not allow you to use the both keyboard and mouse because it becomes too big. This is the keyboard and it is very much big as compared to this. तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ़र्क है और ये आसान है, हैंडी है, इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा मज़ीद देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हमारे पास कुछ और तो नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो इसके साथ एक इसकी छोटी सी है यूज़र गाइड भी है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
you can go through that. It is in English language, so you can easily go through what is written here and what are the supporting things and all the details. So let's just plug that in Android TV box and see whether it is useful or not. ये फ़ायदेमंद भी है चीज़ परचेज़ करना, या बस हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं इसको ख़रीदने के लिए, या पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अभी देखते हैं। जी, this is my LED of TCL 43 inches and if you see I have attached this Android TV box with it, और मैं इसके साथ अब अपनी USB डिवाइस लगाऊंगा कीबोर्ड की। Now I'm going to plug that in this USB like this. I have plugged that and I'm going to place it there. Now let's see what is the performance. So this is, I'm going to now press the first button and you can say the volume is increasing and decreasing as soon as I press this volume down and volume up button. If I press left and right, you can see it goes very easily. I click on the center button. Okay, I entered the apps में आ चुका हूँ। मैंने जैसे ही मीडिया सेंटर पे क्लिक किया मैं इसके अंदर आ गया। I'm going to click here, right click. So I'm coming back now. It is pretty much handy, you can say. ये काफ़ी handy है, आप इसको आसानी से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। I'm going to change the light color. This is blue now. तो आप देख सकते हैं कि जी हर चीज़ बहुत आसानी से बहुत मज़े से खुल रही है, ओपन हो रही है। तो लेट अस ओपन YouTube and see whether it's handy or not. In case of YouTube, let's say we are going to see or open any video. I'm going to check the mouse pad as well. तो माउस पैड भी जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे उसको मूव कर रहा हूँ ये चला रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से। When I click here, the video opens very easily. I click here and you can see it is running without any lag. I'm pressing right click. When you press right click, it is functioning as a back button. So you go back. हम उधर वापस आ जाते हैं. If I go to Google Play Store and I want to type something there now, let's say I'm going to write here games and going to play that to see whether a game works or not. Not going to use some big game because it will take time to download. Let's say this bubble shooter. Going to install that. So I have downloaded this game by the name of Bubble Shooter. You can see as well. I'm now going to play that. मैंने ये गेम डाउनलोड किया, मैं इसको खोलने लगा हूँ, देखते हैं कितना टाइम ये लेती है और ये कैसे चल रही है और कीबोर्ड हमारा इसके साथ। I'm going to play that, use that as well. Let's see now. So if you see here, I'm using both of these things to use the game. It works fine. आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी तो हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते निकाल देती है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ मैं नहीं कर रहा। अगर मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो आई थिंक फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल देती है। आपको इसको बार बार चार्ज करने का जो है ना वो नहीं सोचना पड़ता, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर मुझे आई वॉज थिंकिंग फर्स्ट दैट हाउ कैन दिस बी बेनिफिशियल, ये एक छोटी सी चीज़ मुझे इतना फ़ायदा कैसे दे सकती है और ये बिल्कुल ज़ाया है, यानी कि मुझे नहीं ख़रीदनी चाहिए। लेकिन जब मैंने एंड्रॉयड बॉक्स ख़रीदा और उसके साथ मुझे ये मिली, तो मैंने जब इसको यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद पता चला कि ये तो काफ़ी हैंडी है। आपको
माउस और कीबोर्ड की हैसल से छुटकारा मिल जाता है. You don't need a separate mouse and keyboard to hold, and just you can use this in one hand, and it is very user friendly. आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. So if you want such a thing, आप इसको ख़रीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. सारी गेम्स इस पर नहीं चल रही. I have tried to run Temple Run, लेकिन the Temple Run game was itself not running. It did not start. तो जब वो start नहीं हुई तो फिर इसके buttons कोई काम नहीं कर रहे थे उसके साथ. G, on a concluding remark, I would like to tell that yes, you can use that for the navigation of videos and for the volume up and down and next video and rewind and all the things, but you cannot use that for the games. मैं उसको prefer नहीं करता that you use them this device for playing games because some of the buttons don't work. So if you want to buy that for playing games, don't go for that. But for other purposes, yes, it is suitable.